Welcome to the chapter of Basics of Chemistry. This particular video will be helpful for you in 9th and 10th standard both to understand the basics of chemistry. Here we will do formulas of compounds, equations, valency, atomic structure and much more. But to do that successfully, we must understand structure of the atom and also understand the first 20 elements. So you have to keep writing with me all the information of every single atom, first 20 elements of periodic table. Name of the first element is hydrogen. Atomic number 1, and if atomic number is 1, protons and electrons are 1 each. Number of neutron, never be overconfident. 9th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में एक टेबल है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखे हैं, वो बाय हार्ट करने हैं. देर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मूला और ट्रिक. कीप रेफरिंग and eventually you will start remembering it. Hydrogen does not have any neutron. 0. Electronic configuration. Configuration के लिए you have to keep in mind the maximum capacity of each orbit. First orbit 2, second orbit 8, third orbit 18, fourth orbit 32. बट इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वी विल बी हैप्पी विथ 2 and 8 and few more in the third orbit. Electronic configuration of hydrogen is just 1 because it has 1 electron. Right? Electronic configuration is just 1. Mass, number of protons plus number of neutrons, 1 plus 0, mass of hydrogen is 1. डोनेट और गेन वो एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा. हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है. पहले तो सर्कल बना के इसमें लिख दो +1 मीन्स न्यूक्लियस हैज 1 प्रोटॉन and 1 electron in the first orbit. This electron can either be donated or it can gain 1 more electron to become stable. हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स अलाउड है. हीलियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अलाउड है. उसके बाद सबको 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी in the outermost orbit. So hydrogen, if it donates electron, it becomes a positive ion, H plus. If it gains 1 electron, तो बाहर 2 हो जाएंगे. Still it will be considered as stable, H minus. And H plus and H minus ions पता होना चाहिए. डिपेंडिंग ऑन सामने कौन है, इट विल बी एबल टू डोनेट और गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम H प्लस और H माइनस. रिएक्शन, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉनिक configuration 1 gains 1 electron to become H minus ion, electronic configuration 2, and it is stable. This much information you should have at the top of your mind all the time if you are sitting to do chemistry. So copy this slide, draw the structure of the atom also, then we will move on to the next one. Second atom name is helium. नाम के नीचे सिंबल लिख सकते हो He.
atomic number 2, number of proton 2, number of electron 2, number of neutron, refer to the table, it is 2. Therefore mass becomes proton plus neutron 4. न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और बाहर घूम रहे 2 इलेक्ट्रॉन. This is already stable. Donate, no. Gain, no. Positive negative ion, no. Reaction, no. Electronic configuration 2 आएगा. And it is a stable compound. It's a noble gas. It will not react with anybody. Pause the video, copy it down. Third, lithium. Symbol Li, atomic number 3, proton 3, electron 3, neutrons 4 neutrons. Proton plus neutron creates the mass. Mass of lithium is 7. Electronic configuration. 3 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है और न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन्स है. फर्स्ट ऑर्बिट has capacity of only 2. So the third orbit will be opened and 1 more electron will be fit here. Total 3 electrons. 2, 1 is the electronic configuration. अब इसको स्टेबल होने के लिए ये 1 डोनेट कर देगा. So donate 1 electron, therefore becomes lithium 1 plus ion. It does not gain electrons. और रिएक्शन कैसे होगा? लिथियम एटम 2, 1 becomes lithium 1 plus ion becomes stable by donating 1 electron. Drawing the structure is a must, and rest of the information also you have to remember. Copy it down. Fourth, beryllium, Be. Atomic number 4, proton 4, electron 4, neutrons 5 जो तुम्हें बाय हार्ट कर लेना है. Therefore mass is 9. Electronic configuration 4 इलेक्ट्रॉन्स का 2, 2. तो बीच में 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 सेकेंड ऑर्बिट में. It will donate 2 electrons to become stable. Donate 2 electrons. Therefore it becomes beryllium 2 plus ion. It does not gain. The reaction is beryllium atom with the configuration of 2, 2 becomes beryllium ion with the configuration of 2 stable, इसलिए 2 plus. Why? Because it released 2 electrons.
Next, atomic number 5, boron. Symbol B. Atomic number 5, protons 5, electrons 5, neutrons 5. Mass, proton plus neutron 10. Electronic configuration 2, 3. So 5 protons in the nucleus, 2 electrons in the first orbit, 1, 2 and 3 electrons in the second orbit. It will donate 3 electrons. Donate 3 electrons. Therefore, it will become boron 3 plus ion. It will not gain. The reaction is boron atom with configuration 2,3 becomes boron 3 plus ion with a stable configuration of 2 and releases 3 electrons. Carbon, symbol C, atomic number 6, proton 6, electron 6, neutron 6. Mass, proton plus neutron 12. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 बचे 4, वो चारों चार बाहर के ऑर्बिट में 1, 2, 1, 2, 3, 4. Now, carbon is an exception. Let me discuss this for 2 minutes. बोरॉन के पास 2 ऑप्शन थे. It can gain 5 electrons. तो ये 3 plus 5 8 हो जाता, तो वो स्टेबल बन जाता. और it can donate 3 electrons. It chose to donate because gaining 5 electrons is difficult. बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन थे. It could have gained 6 electrons. Or donated 2 electrons. But donating 2 electrons is easy. Gaining 6 electrons is difficult. यहाँ पे donate 4 electron तो वो स्टेबल बन सकता है. गेन 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 plus 4 8 हो सकता है. वो दोनों नहीं करेगा. कार्बन डज नॉट डोनेट, कार्बन डज नॉट गेन. लिख दो कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विच विल बी अ पार्ट ऑफ 10 स्टैंडर्ड केमिस्ट्री. बट फिलहाल इतना लिख दो, शेयर्स. नो रिएक्शन बिकॉज इट डज नॉट डोनेट, डज नॉट गेन. इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन के लिए इतना ही. और यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख दो कोवैलेंट बॉन्ड. व्हेन यू शेयर इलेक्ट्रॉन्स you create covalent bond. Slowly I am going to increase my speed after 3 more elements. Name nitrogen. Symbol N. Atomic number 7, proton 7, electron 7, neutron 7, mass 14. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 5. अब चीज़ें उल्टी हो गई. या तो ये 5 डोनेट कर सकता है
या 3 गेन कर सकता है, बिकॉज स्टेबिलिटी के लिए तुम्हारे बाहर के ऑर्बिट में या तो 2 चाहिए या 8 चाहिए. अब 2 नहीं चलेगा. फ्रॉम नाइट्रोजन ऑनवर्ड्स सब लोग 8 के पीछे पड़ जाएंगे. इट विल नॉट डोनेट, it will gain 3 electrons and therefore become N3 minus ion. How? Nitrogen atom configuration 2,5 gains 3 electrons to become nitrogen ion 2,8. नाइट्रोजन के एटम में 7 प्रोटॉन है. 1 2 3 4 5 6 7. ऑक्सीजन सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8, न्यूट्रॉन 8, मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16. 8 प्रोटॉन्स के साथ 2 in the first orbit and remaining 6, 1 2 3 4 5 6 in the outer orbit. Configuration 2,6. It will not donate 6 electrons. It will gain 2 electrons and therefore become O2 minus. Oxygen atom 2,6 gains 2 electrons to become oxygen ion 2,8 with a valency of -2. Fluorine F, atomic number 9, proton 9, electron 9, neutrons 10, mass proton plus neutron 19. Electronic arrangement 2,7 1 2 1 2 3 4 5 6 7. It cannot donate 7 electrons. It will gain 1 electron and become F1 minus ion. सिर्फ F माइनस लिखोगे तो भी चलेगा. Reaction fluorine atom 2,7 gains 1 electron to become F -1 ion with a stable configuration of 2,8. Neon Ne, atomic number 10, proton 10, electron 10, neutron भी 10. Mass proton plus neutron 20. It will not donate, it will not gain because 10 electron के साथ configuration is 2,8. You can write stable. ये दूसरा नोबल गैस मिला. पहला हीलियम था, दूसरा नियॉन है. They never react with anybody because they are already considered as stable. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. 10 protons, 10 electrons. Sodium
symbol Na, atomic number 11, proton 11, electron 11, neutron 12, mass 23. अब थर्ड ऑर्बिट खुलेगा बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट फुल है, 1 electron extra. For sodium it is easy to donate 1 electron. So donate 1 electron, therefore become Na1 plus. It will not gain. So sodium atom with configuration 281 will become sodium plus ion with configuration of 28 because it donated 1 electron. An atom looks like this: 11 protons in the center, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाहर सिर्फ एक. मैग्नीशियम Mg, atomic number 12, proton 12, electron 12, neutrons 12, mass proton plus neutron 24, configuration 2 8 2. Donate 2 electrons to become Mg2 plus ion. It will not gain electrons. Reaction: magnesium atom 282 becomes magnesium 2 plus ion 28 because it donated 2 electrons. Structure of the atom: first orbit 2, second orbit 8, last orbit 2, and in the center 12 protons. Aluminium symbol Al, atomic number 13, proton 13, electron 13, neutrons 14. Mass proton plus neutron 27, electronic configuration 2 8 3. It will donate 3 electrons and therefore become Al 3 plus ion. It will not gain. Aluminium atom 283 becomes aluminium ion Al3 plus, which is stable by releasing 3 electrons. First orbit 2, second orbit 8, outer orbit 3. Silicon Si, atomic number 14, proton 14, electron 14, neutron 14, mass 14 plus 14 28, electronic arrangement 2 8 4. ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, चले गए 4 तो स्टेबल बन गया, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो 4 plus 4 8,
स्टेबल, ये एक भी नहीं करेगा, ये शेयर करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सेम लाइक कार्बन। 14 प्रोटॉन्स के आसपास घूमते हुए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 and 4 more. That's silicon. Phosphorus, P, atomic number 15, proton 15, electron 15, neutron 16, mass 15 plus 16 31, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 2 8 5। 5 आते ही चीज़ें बदल जाती है। नाउ इट विल नॉट डोनेट 5, it will gain 3 electrons and become P3 minus. 15 protons in the center, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5. Phosphorus atom with configuration 285 gains 3 electrons from somebody to become P3 minus ion with a stable configuration of 288. Sulfur, symbol S, atomic number 16, proton 16, electron 16, neutron 16, mass 16 plus 16 32, and electronic arrangement 2 8 6. It will not donate 6 electrons, it will gain 2 electrons to become S2 minus ion. So sulfur atom with 286 will gain 2 electrons from outside to become S2 minus ion 288 and achieve stability. 16 protons in the center, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. Chlorine, symbol Cl, atomic number 17, proton 17, electron 17, neutron 18. Therefore mass 17 plus 18 35, but bracket में लिख दो 35.5 is used as the mass of chlorine. It's a separate topic which I'll explain some other time. Electronic configuration 287, वो 7 डोनेट करने से बेटर है गेन 1 इलेक्ट्रॉन ताकि बाहर ऑर्बिट में 8 हो जाए, and therefore becomes Cl1 minus. You can also write Cl minus. Chlorine atom 287 gains 1 electron to become Cl minus ion and becomes stable 288. 17 protons in the center, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7.
argon AR symbol, atomic number 18, proton 18, electron 18, neutron 22. Proton plus neutron, mass of argon is 40. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं 2 8 8. It does not need to donate, does not need to gain, it is already a stable element. Noble gas, ये तीसरा आया. It will not react because it is already stable. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Stable, no reaction. आर्गन 18 तक 9th स्टैंडर्ड के टेबल में दिया है. 19 और 20 भी तुमको आना चाहिए. एटॉमिक नंबर 19 is potassium and atomic number 20 is calcium. Potassium K, atomic number 19, proton 19, electron 19. It has 20 neutrons. Mass 19 plus 20 39. Electronic configuration 2 8 8 1. ये बाय हार्ट कर लो कि इसके लिए फोर्थ ऑर्बिट खोलना पड़ा. देयर माइट बी कंफ्यूजन इन योर माइंड कि 2 8 18 32 कैपेसिटी थी, तो थर्ड ऑर्बिट में इतनी सारी जगह है तो यहीं पे 9 लिख देते. बट केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. दिस इज एक्सेप्शन, सो जस्ट एक्सेप्ट इट द वे 2 8 8 1 याद रख लो. 1 डोनेट करना ईजी है. इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, नॉट गेन, एंड देयरफॉर बिकम K 1 प्लस आयन. सो पोटेशियम एटम with configuration of 2881 becomes potassium positive ion with configuration of stable 288 by releasing or donating 1 electron. So 19 protons, 2 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाहर 1. And last, calcium Ca, atomic number 20, proton 20, electron 20, neutron 20, mass 20 plus 20 40. Electronic configuration 2 8 8 2. It will donate 2 electrons, not gain, and therefore become Ca2 plus ion. Calcium atom with the configuration of 2882 becomes Ca2 plus ion with a stable configuration of 288 by releasing 2 electrons. 20 protons in the center. 1 2 1 2 3 4
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बाहर 2 electrons. The more you write, the more you see it, the easily you will remember. So this much is the first thing you have to by heart. Now comes the list of ions. हमने बहुत सारे ions बनाए. Copy this list of positive ions. Pause the video, write positive ions, metals, and copy down this list. उसके बाजू में add negative ions. Pause the video, copy down this list also. And copy down this list also. These are called polyatomic positive ions. बहुत सारे atoms मिल के ion बनाते हैं, polyatomic positive ions, and these are called polyatomic negative ions. Pause the video, copy down every ion. Once you have the entire list of ions in front of you, you can make formula of any compound given to you. तुमको कोई भी नाम दे, तुम उसका फॉर्मूला बता सकते हो if you remember the ions. So make a list of all names, then I'll teach you how to make the formula. Lithium sulfate, sodium nitrate, potassium hydroxide, iron 2 chloride. ये रोमन नंबर 2 है कैपिटल में. आयरन 2 क्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्राइट.
You don't need to by heart the formulas of compounds. You can simply make yourself in 5 seconds. But condition is तुमको ions याद रहने चाहिए. If you remember the ions with their valencies, nothing is impossible. Let me show you how. लिथियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए. सिंबल Li. सल्फेट ये रहा SO4 2 माइनस. सल्फेट SO4 होता है. SO4 2 माइनस है या -2 2 माइनस जो लिखो, और लिथियम +1 है. वो कहाँ पे मिला? ये रहा. So from the table you write the valencies and cross Li2 SO4 1. Li2SO4 is the formula of lithium sulfate. सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na. नाइट्रेट में कंफ्यूजन हो सकता है. NO3 और NO2 दो होते हैं. बेटर टू ऑलवेज चेक नाइट्रेट NO3 माइनस -1 सोडियम +1. अगर वैलेंसी डायरेक्ट मैच करती है +1 -1, तो इन दोनों को बस साथ में लिख दो. फॉर्मूला बन जाता है NaNO3. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम इज K. हाइड्रोक्साइड इज OH. K+1 OH -1. ये सब कुछ टेबल में मिलेगा. आई विल नॉट अगेन एंड कीप शोइंग यू, बट यू हैव टू सर्च इन द टेबल. You will find it, and if you don't, give me a call, WhatsApp me, I'll help you out. But maximum चीज टेबल में है. If +1 -1 directly matches, you just have to add and write them together. The formula of potassium hydroxide is KOH. Iron 2 chloride. Iron मतलब Fe, chloride मतलब Cl. Cl की वैलेंसी -1 फिक्स है. आयन की दो वैलेंसीज होती है. कहाँ है? ये रहा Fe3+, और ये रहा Fe2+. इट्स अ रेयर यूज. मैंने तुमको अभी रेयर यूज वाले नहीं लिखवाए हैं, बट दिस इज एन एडिशनल लिस्ट इफ यू विश टू कॉपी इट डाउन. वेरी रेयरली यू विल फाइंड देम. ये रहा आयन और कॉपर Cu+, Fe2+. तो आयन 2 is 2+, Fe1 Cl2, FeCl2 is the formula. Copper hydroxide CuOH, copper +2 OH -1, Cu1 OH2, Cu1 OH पूरा 2 times. सोडियम सल्फेट NaSO4 +1 -2 अपनी अपनी वैलेंसीज Na2SO4. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन -1 फिक्स है. हाइड्रोजन को +1 बनना पड़ेगा. HCl. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है. इट इज हाइड्रोजन एंड SO4 कंबाइनिंग. सल्फेट -2,
hydrogen plus 1, H2SO4 1, H2SO4. Nitric acid is a combination of hydrogen and NO3. प्लस वन माइनस वन, वन वन मैच करे तो डायरेक्ट लिख देने का HNO3. सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वन माइनस वन डायरेक्ट मैच NaOH. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम पता होना चाहिए, ना पता हो तो टेबल में ढूंढो, मिल जाएगा. ये रहा अमोनियम NH4 प्लस. प्लस वन हाइड्रोक्साइड minus 1 plus 1 minus 1 direct match, NH4OH is the formula. Aluminium oxide, aluminium oxide मतलब ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की -2, Al2O3, Al2O3 is the formula. Sodium oxide, sodium oxygen +1 -2, Na2O1, Na2O. कैल्शियम ऑक्साइड CaO +2 -2. अगर ये दोनों डायरेक्ट मैच करती है, +2 -2 +3 -3 +4 -4, तो सीधा CaO लिख देने का. डू नॉट क्रॉस एंड डू नॉट राइट Ca2O2, इट्स रॉन्ग. कैल्शियम नाइट्राइट, कैल्शियम नाइट्राइट नहीं पता, कॉन्फिडेंस नहीं है, टेबल में ढूंढो NO2 माइनस. कैल्शियम +2 नहीं पता, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें ढूंढो Ca2 प्लस, CaNO2 ट्वाइस. That is how you can make the formulas of any compound given to you. All you have to do is by heart this table. 9th standard textbook के lesson 3 में टेबल 3.6 और 10th स्टैंडर्ड की लेसन 2 की प्रेसी के अंदर you will find this list. Do it from anywhere, but keep it in your mind for coming 2 years, 9th and 10th standard. Next topic, लिखो ionic bond. ये सारे के सारे कंपाउंड्स कहाँ गए? अबे gone. Anyways, the compounds which we did right now, they all are ionic compounds. I'm trying to go back and I don't know. Okay, gone. Won't come back. Okay, something is it's hung. Anyways, forget the list and let's do the next topic.
आयोनिक बॉन्ड 9th-10th स्टैंडर्ड दोनों में ये आता है. आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑल द 20 एलिमेंट्स विच यू सॉ. वो कैसे बनते हैं उसका एक एक्सप्लेनेशन है. सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला नहीं पता, राइट NaCl, राइट वैलेंसी, फॉर्मूला मिल गया. हाउ डज सोडियम क्लोराइड form an ionic bond? Sodium configuration 281 becomes Na plus ion and donates one electron. This one electron is accepted by chlorine 287. It also becomes stable Cl minus ion 288. सोडियम ने डोनेट किया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया एंड बिकेम Na प्लस एंड Cl माइनस आयन. इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है दैट्स कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड एंड NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड. इतना समझ में आना चाहिए. पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन द रिएक्शंस. कैल्शियम ब्रोमाइड. कैल्शियम तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो अच्छा है, ना लिखो तो भी चलेगा. कैल्शियम 288 becomes calcium 2 plus ion by donating 2 electrons. Those 2 electrons are accepted by bromine. ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए. So always you should keep the list of ions in front of you and chapter 4 का first 20 elements का list. अब इसमें ब्रोमीन नहीं है. 20 के बाहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर ना जानो तो भी चलेगा. So no need. Don't even try because your knowledge is still limited in chemistry. But इतना याद होना चाहिए that bromine has the capacity to accept one electron and become Br minus ion. वो आयन के लिस्ट में मिल जाएगा. बट ये तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है. Then 2 bromine will accept 2 electrons to become 2 Br minus ions. तो एक कैल्शियम आयन comes in contact with 2 Br ion CaBr2 is an ionic compound with ionic bond. Magnesium sulfate. Magnesium becomes Mg2 plus by donating 2 electrons. एंड सल्फेट करके एक ग्रुप है जो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा टू बिकम SO4 2 माइनस. Mg2 प्लस SO4 2 माइनस के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, बन गया मैग्नीशियम सल्फेट. MgSO4 इज द फॉर्मूला. One last time, aluminium oxide.
Aluminium becomes Al3 plus by donating 3 electrons. Oxygen gains 2 electrons to become O2 minus. पर ये तो 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ये 2 ही ले रहा है, तो इसका अरेंजमेंट ऐसे पता चल जाएगा AlO Al3 plus O2 minus Al2O3 is the formula, which means I need 2 aluminium ions. 2 aluminium ions becomes 2 aluminium atoms becomes 2 aluminium ion, and 2 3s are 6 electrons are released. O3 है, 3 oxygen atom gains those 6 electrons to become 3 oxide ions. So 2 Al3 plus and 3 O2 minus combines with each other. This is plus 6 valency, this is minus 6 valency, Al2O3. This is shortcut, this is long cut explanation. Any compound out of those 20, you should be able to write the long cut. उससे तुम्हारा केमिस्ट्री सुधरेगा. And the last topic, covalent bond. Ionic bond, covalent bond. If you remember कार्बन की कुंडली में और साथ में सिलिकॉन भी था, they don't donate, they don't gain electrons, they share electrons. And sharing of electrons is important to learn for 10th standard. 9th में नहीं इतना आता है, फिर 8th में आया था. Number 1, H2 molecule. Hydrogen atom, electronic configuration 1. Another hydrogen atom, electronic configuration 1. Becomes H2 molecule. और दोनों H के बीच में जो बॉन्ड है is called covalent bond. और ये शेयरिंग से आता है. कैसे? You have to draw the orbits also in this case. कोवैलेंट में ऑर्बिट ज़रूरी है. हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन, दूसरे हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन. फर्स्ट ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन, इसका फर्स्ट ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन. सॉरी, ये प्रोटॉन्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे H लिखो. हाइड्रोजन विथ 1 ऑर्बिट, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज करेंगे कि किसी का भी ऑर्बिट देखो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे. दूसरे हाइड्रोजन का ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट बिकम्स अ स्टेबल मॉलिक्यूल. दोनों ने अचीव कर लिया 2-2. 10th स्टैंडर्ड में ये सेम चीज ऐसे दिखाते हैं. H dot, H dot, and then you draw a circle like this. हाइड्रोजन के बाहर एक एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में. दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. ये सर्कल ऐसे करना है. H के पास 2 आ गए,
दूसरे H के पास दो आ गए. This is called covalent bond formation. 9th standard students might understand a little less, but more examples I solve, the more easy it will become. Number 2, oxygen molecule. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6 है. सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ड्रॉ करने के 1 2 3 4 5 6 plus another oxygen will come 1 2 3 4 5 6. बोथ आर अनस्टेबल क्योंकि दोनों को 8 चाहिए. दे विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच. सर्कल करेक्टली ड्रॉ करोगे. ये देखो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है. दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है. दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड. डबल कोवैलेंट बॉन्ड. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. Atomic number of nitrogen is 7. Electronic configuration is 2,5. N 1 2 3 4 5. 5 electrons in the outermost orbit. दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5. They will come close and share 3 electrons each. So when you make this circle, you can see the nitrogen has 8 electrons. And this circle, nitrogen has 8 electrons. This is called triple bond. Triple covalent bond. Water. H2O कैसे बनता है? Hydrogen has 1 electron in the outermost orbit. Oxygen has 1 2 3 4 5 6 electrons in the outermost orbit. And one more hydrogen has 1 electron. They all are unstable. Hydrogen को 2 चाहिए, oxygen को 8. This is what they will do. 1 2 3 4 5 6. ऑक्सीजन के खुद के 6. एक तरफ हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले आएगा, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले आएगा. Now when you see like this, hydrogen is stable. This hydrogen is stable. ऑक्सीजन के भी 8 हो गए. This is called covalent bond or a covalent compound created by sharing of electrons. Carbon dioxide. Carbon, atomic number 6, configuration 2,4, outer orbit में 4 है. Oxygen, atomic number 8, configuration 2,6, outer orbit में 6 है. Carbon 1 2 3 4. Oxygen 1 2 3 4 5 6. एक और ऑक्सीजन 1
2, 3, 4, 5, 6. How will they arrange so that they become stable? कार्बन बीच में आ जाएगा, ऑक्सीजन दोनों तरफ अपने अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, and they sit with each other in such a way that when you draw a circle, oxygen has 8, this oxygen has 8, and the carbon also has 8 because they are sharing. जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा. After sharing they all become stable. It's C double bond O double bond O, molecule of carbon dioxide. This much if you know, your basic chemistry will be very powerful. So work hard, keep watching the video every 6 months to revise and refresh your ideas. Thank you so much.